discussed what a major term is, what a minor term is, and what the middle term is. And we went a little further and we talked about how do we get the mood after knowing what these terms are. Basically, how do we get to the major premise and the minor premise by using what we've determined the terms, the major and the minor and the middle term. Today, we're going to be going further and we're going to be talking about the figure of the syllogism. So together with the mood, these two components basically tell us what the logical form of an argument is. So you can say that mood plus figure equals the logical form of a syllogism. So the mood of a standard form categorical syllogism is not enough to understand its logical form. So for those of you who remember what a mood is, जिनको नहीं याद वो वापस पिछली स्लाइड पे जाके पिछली लेक्चर पे जाके समझने की कोशिश करें कि हम लोग मूड हमने कैसे फिगर आउट किया था और वो होता क्या है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का जब आपके पास मूड आ जाता है, so why is that not enough for us to tell the entire, give us the whole picture in a nutshell? It's not enough because you can have the same mood for more than one syllogism. For example, let's look at this argument. It says, all great scientists are college graduates. Some professional athletes are college graduates. Therefore, some professional athletes are great scientists. And if you look at the second argument, all artists are egotists. Some artists are paupers. Therefore, some paupers are egotists. इन दोनों arguments को अगर आप देखें तो इन दोनों का mood क्या है? दोनों का mood एक ही है, यानी कि AII. ठीक है? You can check. So अगर दो arguments का mood एक ही है, so फिर how do we differentiate between the two? Apparently, like if you look at them more closely, they're very different from each other. Not just linguistically, even like if you look at the form of these arguments, कि इनमें terms कैसे placed हैं. Like I'm giving you a heads up, so you can figure out कि different तरीके से terms आ रही हैं. Middle term की placement, major term की, minor term की ऊपर नीचे हैं, दोनों में different हैं. So इसको अगर आप मद्देनजर रखें, so फिर what it becomes more interesting. So इसमें हो क्या रहा है कि obviously अगर आप major premise देखें, you have the all great scientists are college graduates, so all P is M. ठीक है? We know कि predicate term जो है वो इसमें पहले आ रही है. Predicate term हमने determine कर ली through the conclusion. So when we look at the conclusion, I told you कि conclusion के अंदर जो predicate term होती है वो आपकी जो predicate की जगह पे आ रही होती है term, वो आपकी जो होती है it's basically the predicate, the major term, ठीक है? और जो subject की जगह पे आ रही होती है वो आपकी minor term होती है, right? यही हमने बात की थी ना. So अगर आप उस हिसाब से इसको देखें, so पहले major premise के अंदर all P is M, यानी predicate term पहले आ रही है, middle term फिर आ रही है, और फिर minor premise के अंदर some S is P है, उसके अंदर subject term पहले आ रहा है और middle term बाद में आ रहा है. ठीक है? इसी तरह अगर आप दूसरी आर्गुमेंट को देखें, उसमें मिडिल टर्म जो है वो पहले आ रहा है. ऑल एम इज पी बेसिकली. सो आर्टिस्ट जो है इस आर्गुमेंट के अंदर इट हैपेंस टू बी द मिडिल टर्म, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अपीयरिंग इन द कंक्लूजन. कंक्लूजन में हमारे पास ईगोटिस्ट है और पॉपर्स है, सो द ओनली टर्म दैट्स लेफ्ट इज आर्टिस्ट, सो दैट शुड बी द मिडिल टर्म. बट फर्क बेसिकली इन दोनों आर्गुमेंट्स का, मेरा कहने का जो मतलब है, वो बेसिकली मिडिल टर्म की प्लेसमेंट है. So in the first argument, basically the middle term happens to be differently positioned than it is in the second argument. And this is what is different between these two arguments. हालांकि इन दोनों के जो moods हैं वो हमने अभी बात की है कि वो एक ही हैं, यानी दोनों AII हैं. लेकिन middle terms की वजह से ये जो है ये argument फर्क हैं दोनों. So इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है? बेसिकली ये जो मिडिल टर्म की प्लेसमेंट है यही फिगर कहलाती है. ठीक है? ये वही स्लाइड है, the one that I just talked about. So M is the predicate term of both premises in the first one, and M is the subject term of both premises in the second argument. So this shows that the different possible positions of the middle term are important for the logical form of a syllogism. This is exactly what I just said. Thus, to describe the form of a syllogism completely, we must state its mood and its figure. So mood का तो हमें समझ आ गया. Figure के ऊपर हमने अभी बात कर ली. Figure है क्या? Figure basically middle term की placement है और कुछ भी नहीं है. लेकिन
अब इस प्लेसमेंट के साथ how will we get to know what the possible figures of an argument of a syllogism are? So ये है another thing that you have to remember. So इसको आप एक मिनट देखें. So basically you have 4 figures for syllogisms. Okay, you have various moods, obviously A, blah 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 blah, but you also have 4 different kinds of figures. अगर आप इनको लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बस m की प्लेसमेंट जो है वो इधर उधर हो रही है. सो m कितनी पोजीशंस ले सकता है मेजर टर्म में और माइनर टर्म में, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो स्टेट हुई हैं. यानी कि इट कुड बी फिगर 1 में अगर आप देखिए, इट कुड बी MP, यानी मिडिल टर्म पहले आ रही है, प्रेडिकेट टर्म बाद में आ रही है, या SM, या M जो है वो दोनों जो है बाद में आ सकता है, PM, SM, मेजर माइनर प्रेमिस, नीचे वाली तो कंक्लूजन है, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी द सेम, SP, SP, SP. फिगर 3 में दोनों M's जो इधर आ गए हैं, और फिगर 4 के अंदर M मिडिल टर्म जो है वो मेजर प्रेमिस में प्रेडिकेट है, और माइनर में इट्स द सब्जेक्ट टर्म. इट टेक्स ऑन दिस फिगर. So this is all the possibilities that we have, at least for middle term. Okay, these 4 figures. So the way that I remember this is through this, figure, picture, whatever you want to call it. Okay, it's called the shirt collar way of remembering where M is positioned. So अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि collar की अगर आप है, यानी कि दो एक तरह के आप triangle scale बनाते हैं. So you can try to remember कि जब ये diagonally चल रहा है तो यहाँ पर फिगर 1 के अंदर M जो है वो slant तरीके से आएगा, फिगर 2 के अंदर जो है वो straight आ जाएगा towards the predicate position, और फिर दूसरी साइड पे if you look at it तो फिगर 3 में वो subject की जगह पे दोनों M's आ जाएंगे, और फिर slant obviously दूसरी तरफ से predicate and subject. So these are the 4 figures that you have to remember. Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4, इनमें M's की position क्या है. ठीक है. Okay, so with that we have some kind of structure. Okay, so we have logical form of a syllogism, यानी कि mood के साथ अगर हम figure को जोड़ दें, so हमें एक syllogism का एक तरह का आप कह लें एक नक्शा सा मिल जाता है, और वो नक्शा जो है वो बहुत important है. और क्यों important है? Because with that form, with the logical form, we can tell, distinguish any argument. Like अगर आपके पास argument given है, you don't even have to go into it linguistically. Like समझने के लिए इस word का ये मतलब है, ये you can just figure out कि ये valid है कि invalid है just by looking at the logical form of that argument. And what is the logical form? This is the logical form. So you have the mood and then you have the figure. So यानी कि if you have the mood, for example AII, then AII2 would mean an argument जिसके अंदर figure 2 use हो रहा है, यानी कि predicate term major premise में पहले आ रहा है, फिर middle term आ रही है, फिर subject term है, फिर middle term है. ठीक है. So this is how you figure out what the logical form of a syllogism is. There are 64 moods. ठीक है. Obviously अगर आप हिसाब लगाएं 64 ही बनेंगे, because A, E, I, O आपके पास है. So उनकी positions जो हैं वो इस तरह बन सकती हैं कि अगर आप उसका करें A, या permutation combination का सीधा सवाल है. So 4 into 64 आपके पास 64 moods हैं, और आपके पास 4 अगर figures हैं, तो यानी कि 256 altogether आपके पास logical forms available हैं. ठीक है. यानी कि 256 possibilities हैं कि क्या हो सकता है इनका, जो हमने दोनों चीजें अभी determine की हैं. अब मजे की बात यह है कि इन 256 लॉजिकल फॉर्म्स के अंदर there are less than 22 dozen जो कि valid हैं, बाकी सारे invalid हैं. Okay, so this is an interesting fact. You should check out your book. I think it talks a bit about that, or you can just like go over the internet and also search for it कि कौन से forms जो हैं वो valid हैं, कौन से invalid हैं. Syllogism की बात हो रही है. But obviously you can do that yourself also. ठीक है. We're going to get there in the next class. For now, let's just look at this quick question. This is for you. घर पे आप इसको समझने की कोशिश करो. So rewrite the following syllogism in standard form. We know what the standard form is, and name its mood and figure. ठीक है? So ये आपने करना है घर पे, और do that because this is going to help you in what's coming ahead.